So hope you are doing well and welcome to this live session where we are going to talk about step by step for doing a stock research. Okay, complete framework. And if you have attended the last session we spoken about basically top down approach, and today we are going to talk about the bottom up approach. Okay, and in this approach I'm going to talk about lot many tools which you can use it in order to do a stock research. And it will be a session where of course you can ask question, and we'll talk about how as an you can analyst, and like an analyst you can do a research for any stock. Okay, so that we are going to talk about. And in this session, guys, I want your no. Of course, you may ask question, but I want your complete no focus here, because some of the things I'm going to talk about the queries, and that queries you can use it for your stock research. Okay, so please use it. Okay, this all these tools which I am going to talk about. Of course, it is technical, but yes, please work on that. Okay, so let us talk about various tools. First we'll talk about the screener. I just directly want to go towards the, you can say, the specific tools, because it will be a lengthy process, and I want to keep this complete video very short, so short and crisp, so you can if you want to check it again, you can check it out. Okay, so talking about that, first we'll talk about the screener. Acha, by the way, you are able to hear my voice properly or not? If yes, then just type Y for yes in the chat box. Just type Y for yes if you are able to hear my voice properly. And in the last time, just to give you a small recap, the last time what we talk about is no top down approach, where we spoken of how to select a sector. Again, selecting the sector and everything will help you to basically go down and select related stocks in that. That's a top down approach, a complete macro analysis first, then sector analysis, and then the stock analysis that we have spoken. If you are not gone through that video, I my sincere suggestion to you, go and check it out. It's a this approach is used if you are not aware about how to use the queries and all that in screener, or how you can understand that if you are focused in few sectors only, so in that sector how you can go deep, that is a top down approach, honestly. Again, you can select 5 to 6 sectors, and in that you can, for each sector you can select you can say three stock. That is enough for you, that is enough for you. And this is how you can go for that. Okay, meanwhile guys, any question you have, you can put it in the chat box in between. I'm not telling that I'll solve your query on the spot, but yes, I'll try to do that. Okay, तो अगर कोई query है तो please put it in the chat box. Okay, and also guys, remember one thing, all these tools which I'm going to talk about, there are many other tools, but these are the tools which we are using when we are doing a stock research, and that is what I'm going to tell you. So first we'll talk about the screener. Now screener, it's a quite a famous tool, www.screener.in. In that there you can use queries. Okay, that queries basically will be helping you to identify any good quality stock. Again, you can put various parameters, and based on that you can select a stock. Now here there is a caveat, guys. You should know various ratios before you get into and understand all this stuff. Okay, अगर आपको ratios ही पता नहीं है, if you are not able to do no ratio analysis, then it will be very difficult for you. So जैसे normal जो ratios होते हैं ना while doing a stock is like price to book or P ratios, or there are a lot many other ratios. Market capitalization is just terminology, you should know about it, and various other ratios you should know before you use this query, because the complete base of this queries is this ratio. Now what I'm going to do is, now I'm going to show you how to use these queries. Okay, so are you ready for that? Yes. Okay, 1 minute guys. So yeah, so let me show you that one. 1 minute. Yeah, so first let me share the screen to you. 1 minute. So hope you are able to see the screens. Now here, if you see here, this is screener. Okay, now when we talk about the screener, guys, here you can see there is a option screens, correct? These screens.
Now these screens you can no click it. 1 minute, I'll just keep this one marker on so that you will able to understand properly. So click these screens, and through that now you can put any queries, and then you can use it. Okay, so this section I am talking about. Okay, so click it, and you can see there are a lot many things available: popular themes, popular formulas, price and volume, quarterly results, valuation. There are various queries available. As I told you, this screen is used to basically identify few stocks based on the parameters you are putting in that query. ठीक है, तो काफी सारे पॉपुलर थीम्स भी है, हम लोग इसके बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू यूज द screens. Okay, so what you have to click, you have to click this create new screen. Okay, so create new screen आप click कीजिए. Okay, just a minute guys. Yeah, so just create new screen, and here no you can put lot many queries. आपको जो भी रिलेटेड क्वेरी आपको जो डालनी है वो आप डाल सकते हो. So like for example, no, you want to check only stocks which are more than 5,000 crore rupees. Okay, so like you can put it like market capitalization, okay, greater than 5,000. Okay, so now you can see here, now before putting a query, you can see here the instructions are given here. All the values will be available putting in the crores. Okay, so यहाँ से वो आपको पता चलेगा. ठीक है, तो आप ये basically 5,000. Then what you have to do, you have to put and. Okay, and then you can put another ratio, like suppose you want to put price to earning, P ratio. Now P ratio should be less. Okay, so what you can do, you can put less, and suppose you want to put less than 15. Okay, and then you can put and. Okay, and then you can see here less than 15. Any other ratios you want to put it, no, you can also put that one also if you want. You can give me any other ratio if you want to put it. Similarly, let us take another ratio like gross profit. Okay, sales growth ले लेते हैं. Sales growth last 3 years. Okay, greater than how much? Suppose 15%. Okay, so this value is in percentage, so you don't have to put anything here. Okay, आपको सिर्फ percentage में है तो आपको बस 15 डालना है, and then and. Okay, similarly profit. Okay, so you can talk about profit growth. Okay, so last 3 years, that also suppose you are talking about maybe another 20%. Okay, and then you put and is compulsory every time. Okay, similarly अगर आप बोलोगे भाई EV by EBITDA, okay, EV EBITDA, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ठीक है, नो लेस देन 5. ओके, एंड अगर सिमिलरली अगर और कोई रेशियो आपके दिमाग में आ रहा है तो आप बोल सकते हो. सिमिलरली यू कैन से दैट यस मैनेजमेंट होल्डिंग. ओके, सो promoter holding, basically promoter holding. अब promoter holding जितना ज्यादा हो उतना बेटर है. ठीक है, so promoter holding greater than maybe you can say 40%. Okay, and then end. ठीक है, or similarly another, if you want to put it like anything else like 1 minute, प्राइस टू सेल्स भी आप डाल सकते हो, लेकिन वो सब डालने की कोई जरूरत नहीं लग रहा है. ठीक है, आई थिंक इतना अभी रखते हैं. देन इफ यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड इट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वंस यू पुट वॉट एवर पैरामीटर्स, जितने आप पैरामीटर्स डालोगे ज्यादा उतना वो स्क्वीज करेगा, उतना वो फिल्टर करके आपको देगा. नाउ हियर basically you are saying okay इतने पैरामीटर कम है, then what you have to do, you have to run this query. Okay, now here there is an option available only companies with September 24 results,
यानी अगर आपको चाहते हो कि भाई जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसका ही चाहिए, देन यू हैव टू क्लिक दिस. Now here once you run this query, you can see here 40 and आ रहा है. Okay, this is not run. Why? Because मैंने and में and डाला है. So you have to remove this. So you just have to remove this. Once you remove, and then you run this query. And you can see here, there are only two stocks available based on our query. तो आप बोलोगे नहीं है तपन, ये तो you can see here two stocks, correct? हमने जो पैरामीटर सेट किए उसके बेस पे दो ही स्टॉक्स मिले. अब आप बोलोगे नहीं है तपन, ये तो बहुत कम है, मुझे तो कम से कम even I want 5 or 10 options and that I want to select. So now you can basically change this. Now here is the query. Okay, आप बोलोगे चलो EV by EBITDA का मैं हटा देता हूँ. Okay, and then you run the query. Now you can see suddenly there are 25 results. Okay, 25 results here. So basically based on the query set, now you have 25 stocks available. Now here understand this are again, आप इसमें क्या कर सकते हो. Now remember one thing, my version of Skinner is a paid version. ठीक है, कि जरूरी नहीं कि आपका भी पेड वर्जन हो. अनलेस यू आर यूजिंग दिस तो ही लीजिए, अदरवाइज यू लेने की जरूरत नहीं है पेड वर्जन. ठीक है, अब यहाँ अगर आप यहाँ देखोगे देर आर 25 स्टॉक्स. ओके, अभी आप चाहते हो कि मुझे इंडस्ट्री सेक्टर वाइज देखना है, देन यू कैन जस्ट क्लिक हियर. Okay, and you can see here there are various sectors like finance, bank, refinery, steel, crude oil, mining, media. Okay, हर जगह के हैं. आप बोलोगे इसमें से which are the finance companies? So you just click here finance, and you can see here these are the 5 finance company. Okay, you can see here, correct? Similarly, अगर आप बोलोगे कि I want to see only banks, then these are only banks available. Okay, 4 banks. ठीक है. So this is how you will able to basically filter the sector wise also. Okay, in this there are 5 banks, in this there are 4 banks, even refineries also you can check it out. Okay, so basically by doing all this stuff, one thing is for sure that you will identify the stocks lying within the parameters you set. ठीक है. नाउ आप बोलोगे कि भाई तपन मुझे अभी इसको एक्सपोर्ट करना है, आई वांट टू गेट इट इनटू एक्सेल एंड आई वांट टू एनालाइज मोर, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक दिस एक्सपोर्ट टू एक्सेल. ओके, तो एक बार आप क्लिक करोगे, क्लिक कीजिए एंड यू कैन सी हियर द एक्सेल इज देयर. ओके, तो आपके सामने पूरा एक्सेल आ गया. ओके, नाउ दिस इज द डेटा कंप्लीटली अवेलेबल, पर ये शायद पेड वर्जन में अवेलेबल है, फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है. And you will able to see all the details plus the sector, the day, the whatever the no, you can see the parameters which you have set. No, पूरे यहाँ आ गए. And now you can go and deeply analyze these companies. ठीक है. अब आप बोलोगे तपन अब इसको मुझे सेव करना है, आई वांट टू सेव दिस क्वेरी. नाउ वन गुड थिंग हियर इज दैट दिस इज रनिंग बेस्ड ऑन द करंट रिसेंट डेटा. ठीक है, जो अभी का डेटा है उस पे ये रन कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. Okay, do you think this is valuable? Then just type V for valuable in the chat box, guys. Just type V for valuable. And by the way, guys, whoever is joined, guys, do like our video without fail. ठीक है. Every Friday I do come up with this session where I can educate more about how you can analyze the stock and everything. As I told you, if you have not attended the earlier session, please do attend the earlier session where we have spoken about top-down approach. On last Friday, वो होगा video. And this is nothing but a bottom-up approach. And guys, if you want to basically join our masterclass this Sunday, you can click the link and you can join for sure. Okay, चले अब आप बोलोगे तपन के यार इसको मैं क्वेरी को मैं सेव कैसे करूं. Okay, then what you have to do, simple, you have to click this save this query. ठीक है, so just click it, save it, like name
Okay, whatever name you want to put, description, एंड मेक द क्वेरी पब्लिक, यानी वो अगर आपको पब्लिक करनी नहीं तो आप ये करके सेव क्वेरी कर दीजिए. सो इससे क्या होगा कि क्वेरी आपकी सेव हो जाएगी. इन फ्यूचर यू कैन डायरेक्टली गो इन द सेव कॉलम and directly run this query, and this is how now you will able to save time and lot many things you can do based on the recent data. So this is how now you can use any query and do it. Now एक्सपोर्ट बता दिया. इवन नाउ हियर इट्स अ एडिट कॉलम्स. नो, एडिट कॉलम्स क्या है? एडिट कॉलम्स कुछ नहीं है. क्या ये जो हमारे जो पैरामीटर्स है ना, जो हमने रेशियो सेट किए है, ये जो रेशियोज है सब, इसको चेंज अगर आपको करना है, ये सब रेशियोज को चेंज करना है, फॉर दैट इट इज अ एडिट कॉलम. सी ऑल दीज थिंग्स नो नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस. एक बार आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जैसे वी एंड माई रिसर्च एनालिस्ट नो, वी डू अ do this all these use no parameters, we use it on a daily basis. That's why हमारे लिए थोड़ा इजी होता है. लेकिन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, you should know the meaning and then you can start with like annual P&L, quarterly balance sheet. हर एक के अलग अलग ratios है. Okay, and these ratios you can use it for analyzing much better way. ठीक है, you can see here no basically you can, देखो यहाँ बहुत सारे पैरामीटर सेट है, वो आप यूज कर सकते हो. एंड लाइक सेल्स ग्रोथ 7 years, लाइक क्लिक किया मैंने, और यू कैन सी दिस इज सेल्स ग्रोथ 7 years. So this is how now you can bring any parameters or any ratios you want to bring it, you can bring it here. ठीक है. So this is how you can use the query. Now you may say Tapan, but no, I don't want to use it again. I want to see which queries other no investors have kept it or saved it here. So what you can do, you can go to screens again. ठीक है, screens again, and there are lot many popular themes available. Okay, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कौन सी कंपनी अंडरगोइंग मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन. अब ये क्वेरी को क्लिक करोगे, then you can see here these are the companies which are having a maximum capacity expansion. And what is the query? This is the detailed query given here. Okay, this is the detailed query given here. Based on that detailed query, you can think about it. About basically you can use this query also, and this is the result. ठीक है, so this is a capacity expansion, and किसने किया था वो भी नाम दिया गया है. Then if you go back, no, there are lot many things like companies with expansion, debt reduction किसका हो रहा है. So these are the companies, and again all these are real data. All these are even popular themes like you can say that बेस्ट ऑफ लास्ट क्वार्टर. तो लास्ट क्वार्टर में किस किस कंपनी ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया, तो वो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ दिखेगी. एंड दिस इज हाउ नो रेडीमेड क्वेरीज आल्सो यू कैन यूज इट. ठीक है, इवन यू कैन सी हियर देयर इज अ कॉफी कैन पोर्टफोलियो आल्सो. ओके, सो बाय सौरभ मुखर्जी. तो उनकी जो बुक है उसके बेस पे कौन सी कंपनीज यहाँ आती है, तो वो यहाँ सब आपको दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वन शुड यूज द क्वेरी. नाउ इवन देयर आर लॉट मेनी सेक्टर्स अवेलेबल, वो भी सेपरेटली दिया गया है. अगर आप चाहते हो तो वो भी आप इवेल्युएट कर सकते हो. लाइक इफ यू वांट टू सी केमिकल सेक्टर, देन डायरेक्टली दिस विच कम. अभी देखो मैं आपको बताता हूँ. नाउ दिस इज हाउ यू कैन नो द नंबर ऑफ स्टॉक्स बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स विच यू आर गिवन. अभी उसको आपको समझ लो, आपको आपके पास 25 स्टॉक्स आ गए. ठीक है, अभी आपको उसमें और डिटेल में जाना है, तो कैसे जाना है? सपोज ना देयर आर 120 रिजल्ट्स इन एफआई बाइंग, नो, जहां ज्यादा हो रहा है. देन व्हाट यू कैन डू, लाइक फॉर एग्जांपल यू वांट टू टेक वन कंपनी, एनी वन कंपनी, लाइक फॉर एग्जांपल जेन टेक्नोलॉजी आपने क्लिक किया. ओके, अब 25 कंपनीज है, उसमें से आपको पहले जेन टेक्नोलॉजीज का देखना है. So this is a bottom up approach where you identify the company first based on the set parameter. Then you can click here. Okay, ये Zen Technologies. Then what you can do, you can see the stock has gone up a lot. Okay, from almost you can say that 700 it has gone to almost 2200. Now this company, if you see, is based on aerospace and the defense space. अभी आप इस कंपनी के
कॉम्पिटिटर कौन है वो आपको यहाँ ही पता चल जाएगा पीएस कंपैरिजन में। अब आपको पता तो चल गया भाई, चलो Zen technology is doing well based on the parameters you set. Now you have to compare with the peers company, and based on that peers company, you will able to understand where the Zen technology is currently standing. So you can see here these are the peers company, and you can compare each and every parameter with each other. Now as it is aerospace and defense, आपको उनका मेन रेशियो कौन सा है, तो वो है पी रेशियो। ना पी रेशियो में आप देखो जेन टेक्नोलॉजीज 96, गार्डन रीच, कोचिंग, ओके, एंड लाइक मेजर नो काफी कम है कंपेरेटिवली। तो ऑफ कोर्स इट्स इन अ प्रीमियम लीग। अगेन नो ये मैंने सेट किए, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको 3 साल 5 साल का रिटर्न देखना है तो आप देखिए जेन टेक्नोलॉजीज ने ऑलमोस्ट 5 years में एवरी ईयर डबल हुआ है compared to Garden Shipyard 53, 52%, even Taneja Aerospace almost 83. So all these stocks has done reasonably well. Of course, सबसे अच्छा Zen Technology किया है। एंड अगर आप यहाँ रेशियो से फायदा ये होता है कि आपको है ना सभी जो पुराना डेटा है कि किस तरह से परफॉर्म किया वो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी अगर आप यहाँ देखोगे सेल्स वेरिएंस एंड प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक है, तो अगर आप देखो सेल्स वेरिएंस 100% है, यानी हर साल कंपनी ने अपना पैसा डबल किया है। ओके, इवन प्रॉफिट वेरिएंस 257%, 250 सीएजीआर से एवरी ईयर परफॉर्म किया है। एंड दैट इज व्हाई यू कैन सी सच अ हाई पी रेशियो दिस कंपनीज having against the competitors. So of course it is doing quite well. Then again, when we see the net profit margin, GP margin, okay, all this stuff will come to know from here. So इससे फायदा ये होता है ना कि आपका पीएस कंपैरिजन आप एक बार देखते हो तो आपको काफी सारी चीजें पता चलती है। Again, when you click this aerospace and all that, okay, even though that the comparison was for the with the 5 companies, but when you click it, you will see there are almost 26 companies, and then in the same space you will able to analyze Zen technology with the competitors, and based on that you can have a much better decision afterwards. So अगर यहाँ देखेंगे ना तो जैसे HAL आ गया, भारत इलेक्ट्रो, मेजरगोन, सोलर, भारत डायनामिक्स, and in one shot you will get all the companies, and you can, if you want, you can import into Excel now and do a proper comparison. Now why I am showing you this के इसलिए ये देखने की जरूरत है क्योंकि based on the parameters, if you got a stock, one has to compare with the competitors and understand why this company is doing well or doing worst. Also this is one part of understanding. The other part is forecasting. अब वो अलग चीज है, वो मैं आज कवर नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ये आप हिस्ट्री के बेस पे आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक की हालत कैसी है अभी। Then of course by comparison, no, you have to understand how is the moat of a company, what is moat, strength and weaknesses of the company, जो हमने already last session में हमने बताया था टॉप डाउन अप्रोच में। तो मोट ज्यादा अच्छा है, then it is good for a company, but whether this moat is going to sustain for next 3 years 5 years or not, that should be the biggest question, and that you have to understand through the फोरकास्टिंग अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो अभी ये जैसे जेन टेक्नोलॉजी है, okay, then you can go down and no, of course PN and all that is almost covered through the ratios. When you go down, and this we already spoken about, no, you can see the promoter holding, and main thing is no, through these con calls or PPT and all that, no, even annual report, no, you will able to understand much better, no, what the company is going to go from here, how it is going to go, क्या है उनके future prospects, and what they are talking about, how the management is talking about, what is the opportunity, वो सब चीजें आप इसको यहाँ से मिलेगा। एनुअल रिपोर्ट से भी ज्यादा ये जो होता है ना कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट एंड ऑल दैट विल हेल्प यू अ लॉट। पीपीटी होती है, so if you see here, if you click this PPT, you will get the complete PPT.
Even when we talk about the con call, that is what you are going to get it. See, remember, we are talking about long term investing. अब long term investing में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी. Even we, my team and all that, no, we spend number of days in a particular stock. Okay, and ऐसा नहीं होता है कि भाई रातों रात ये सब स्टॉक्स आ जाते हैं. नो, इट टेक्स टाइम, एंड इट टेक्स टाइम टू एनालाइज एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन सी द कॉन्को एंड ऑल दैट. नाउ यू में से तपन यार इतना सब पढ़ने का टाइम किसके पास है? ओके, Sima, will try to next session. No, I'll try to do on forecasting. So that will help you guys out. No, so to understand about forecasting. How many want to understand about forecasting? Then just type F for forecasting, guys. Currently, may those sessions I'm talking about historical data only. I'm not talking about forecasting. It's a completely different ball game. तो वो अलग से just type F for forecasting in the chat box if you want to understand that. तो बेसिकली ये इन सब से आपको करंट चीजें पता है. अब आप बोलोगे तपन ये लेकिन इतना सारी इंफॉर्मेशन मैं कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, कैसे देखना है ये सब. या देखो, इसके लिए यू कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो. इफ यू रिमेम्बर 2 sessions before, I have shown you one notebook LM, okay, where you can upload all the your PDFs and all that resources, and then you do a proper research out of that. वो भी आप कर सकते हो. It will be very very helpful, no, to understanding. Earlier ये सब चीजें available नहीं थी, अभी तो ये सब चीजें available है, so you will not face any issue. Yes, yes, Sujit, Seema, Karunesh, Amita, okay, sure, we'll try to do that. No, Tandon, I honestly, I am not a technical analyst guy. I don't do intraday trading and all that, so I'm not a right person to teach you all that. I focus more on fundamentals and long-term investing. So there are many other experts who can talk you about technical analysis and all that. My main base is fundamental analysis and long-term investing. So I'm going to show you that only. Okay. Yes, Vikas. तो आप क्या कर सकते हो कि वो नोटबुक एलम यू कैन यूज. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. नो, हाउ टू यूज AI for doing research. It will be very very helpful. Okay, if I can show it to you 1 minute. तो वो आप जरूर देखिए. इट विल बी, वो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो. एक बार वो देख लीजिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग, नो, आपको काफी सारी चीजें पता चलेगी वहाँ. तो अगर आप यहाँ अगर आप देखोगे ना, देयर इज, वेयर इज दैट वीडियो? 1 minute. या, सो हियर इट इज ना, हाउ टू यूज AI. ये जो वीडियो है ना, आप प्लीज प्लीज अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए. Believe me, all this research which we are doing currently, it will become very very easy for you. ये हाउ टू यूज AI वो एक देख लेना. और मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था ना, ये Part-1 स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस. ओके, तो आज हम लोग Part-2 करे, वो Part-1 है, वो भी एक बार देख लें. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है. तो आप AI के यूज पे आप नो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. यानी आपने स्टॉक सिलेक्ट किया, यू आर कंपेयरिंग विद द कॉम्पिटिटर्स, यू आर चेकिंग अबाउट द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. धीरे धीरे आप ऊपर जा रहे हो. ओके, एंड देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्टर ऑल्सो. सेक्टर के लिए आप AI एंड ऑल दैट यू कैन यूज इट टू अंडरस्टैंड मच बेटर, बिकॉज AI नॉर्मली वर्क्स फॉर द historical data. Artificial intelligence will never give you a forecasting. Okay, that is out of its preview. Yes, in future it may come. Okay, तब तक हमारी जॉब सेफ है, नहीं तो वो भी प्रॉब्लम है. ओके, बट एनीवेज, AI इन करंटली डू हिस्टोरिकल डेटा, तो उसके बेस से आप हिस्टोरिकल डेटा को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे, जान पाओगे, एंड नो इट विल रिड्यूस योर वर्क अ लॉट. सो वो आप करके आप थोड़ा सेक्टर के बारे में जानो. नाउ दिस, as I told you, Zen is in aerospace and defense sector. Go and understand about this sector much more at a detail level, and that will give you a very very good knowledge over the time. Okay, so this is how now you can use AI.
and फिर सेक्टर के बेस पे then you can decide whether you should buy this stock or not. Now that is a bottom up approach, but here the main thing is no, first of all you have to select a right stock and then comparing the peers. So थोड़ा उल्टा है, लेकिन अगर आप वो स्क्रीनर और वो सब जो चीजें मैंने बताई है, if you are able to run properly, believe me, it will be helping you a lot. अच्छा, how many of you are using screener query? And then just type me in the chat box. Just type me in the chat. अगर आप लोग यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो प्लीज प्लीज यूज इट. वो बहुत ही जरूरी है आपको समझने के लिए अबाउट द स्टॉक एंड एवरीथिंग. ओके, देखो यार, ये सब कहने की बात है कि 5 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन इट टेक्स टाइम एंड दैट इज आई नो. मैं कभी बोलूंगा ही नहीं कि भाई आप नो थोड़े टाइम में आप स्टॉक सिलेक्ट कर, नहीं, ऐसा कभी होता नहीं. इट टेक्स टाइम. सो कीप दिस इन माइंड गाइस.